Now we write here speed and velocity. Speed and velocity. The topic is speed is speed is a vector quantity. Speed is a vector quantity, and whereas velocity. No, sorry. Now again, its topic is speed and velocity. Speed and velocity. The speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity. Velocity is vector quantity. Both speed and velocity. Both speed and velocity are measured in meter per second. SI unit of speed and velocity is meter per second. Second, now the dimensional formula. Dimensional formula of both speed and velocity is LT minus 1. The dimensional formula of speed and velocity is LT minus 1. Second topic is speed. The speed is expressed as symbol S. The speed is represented as a symbol S equal to dx over dt. The speed is the rate of change of distance. The speed is what? Speed is the rate of change of distance. Rate of change of distance. The speed is the rate of change of distance. Here x is the distance. The speed is the rate of speed. Speed is defined as the rate of change of distance. It is expressed in the speed is the differentiation of distance with respect to time. Now when speed is defined as rate of change of distance. Distance is a scalar quantity. Now we will calculate the dimensional formula of speed. The speed dimensional formula of speed is just equal to distance. डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला यल होता है और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी, और टी जब ऊपर आएगा तो टी माइनस 1 हो जाता है. तो यस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यल टी माइनस 1. दिस Now similarly velocity is represented as symbol v over arrow. तो v के ऊपर एक एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v वेक्टर. दिस इज कॉल्ड एज v वेक्टर. The velocity is represented as symbol v over arrow. This is the symbol of velocity vector. The v vector is equal to dx. X vector over dt. Here x vector is the displacement. Here x vector is the displacement.
ठीक, here x vector is the displacement, and similarly we will calculate the dimensional formula of the speed. Similarly is velocity. Similarly velocity is defined as a rate of change of displacement. Similarly velocity is defined as rate of change of displacement. Similarly velocity is defined as the rate of change of displacement. Now note down this. Now we'll calculate the dimensional formula of velocity. Similarly, dimensional formula of velocity is equal to what? L. Dimensional formula of velocity is what? Dx over dx vector dt. तो x डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? L अपॉन टाइम का t, L अपॉन t. अब t जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? t इनवर्स रहता, तो v वेक्टर इज इक्वल टू एल टी माइनस 1. Similarly, we can represent here another concept. Third concept is that speed can never be zero. Speed डिस्टेंस क्या और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी. डिस्टेंस जो होती है, another concept is that distance could not be equal to zero. The distance will never be equal to zero. The distance will never be equal to zero, and therefore speed will never be equal to zero. If there is some distance, then speed could never be equal to zero. But velocity could be equal to zero. ठीक, but we can say here velocity could be equal to zero. Velocity could be equal to zero. That is velocity. Therefore, we can see here velocity. Therefore, we could say here velocity could be equal to zero, and speed will never be equal to zero, whereas velocity could be equal to zero, because displacement could be equal to zero. डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इस वजह से वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है. तो एक कॉन्सेप्ट ये है. तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि डिस्टेंस जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है. तो एक से यहाँ से गया
उसके बाद यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया। इसमें 3 पॉइंट मान ए हो गया, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये फाइनल पॉइंट ई है। ठीक, तो डिस्टेंस जो होगी ये मेरा ए से बी तक x1 है, बी से सी तक x2 है, सी से डी तक x3 है और x3 और डी से ई तक x4 है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा ए से ई तक टोटल जो डिस्टेंस होगी उसको जोड़ेंगे तो ये हमारा दिस पॉइंट इज दिस, ये हमारा जो पॉइंट होगा ये है। तो ए से ई तक जो डिस्टेंस हमारे क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगी इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये डिस्टेंस होगा। दिस इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से ई तक जब मिला देंगे ये पॉइंट, दिस पॉइंट, तो इसको ए से ए को, जो ए है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। तो x1 से x4 ए से ए को, तो डिस्टेंस इज द ए से ई तक जो पार्टिकल गया, पार्टिकल ए से ई तक मूव किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और सी से ई तक, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया ए से ई तक इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज greater or equal to displacement. Distance is always greater or equal to displacement. तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। इसी वजह से स्पीड जो होगी, इसी वजह से स्पीड हमारे से जो है स्पीड, इसी वजह से स्पीड हमेशा greater or equal to velocity होगी। And therefore speed is always greater or equal to velocity. Therefore speed is always greater or equal to velocity. Speed is always greater or equal to velocity. This is the point. Speed is always greater or equal to velocity. Second point ये है, ठीक। अब पार्टिकल, थर्ड पॉइंट ये है कि ए से पार्टिकल, पॉइंट ए है, ए से मूव किया बी, बी से मूव किया ए से मूव किया बी, बी से मूव किया सी, ए से मूव किया बी, बी से मूव किया सी, सी से मूव किया डी, डी से ई और ई से ए, वहाँ आ गया। तो इस केस में हमारा क्योंकि ए से शुरू किया, जो पार्टिकल मूव किया है
एक तो ए से मूव किया, उसके बाद ए से मूव किया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी डी ई। तो ए से मूव किया बी, बी से सी से डी से ई और ई से ए। तो यानी कि ए से शुरू किया, फिर ए से शुरू करके एक दी पॉइंट, यदि पार्टिकल जो है, यदि एक पार्टिकल if particle starts moving from point A through path A, B, B, C, D, E, and return back to the point A, then displacement is equal to zero। हाँ, जब जब पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करना शुरू होता है पाथ ए बी सी डी ई ए के जरिए, तो जब पार्टिकल ए से शुरू होकर फिर पुनः इस पाथ से होकर पुनः ए पर आ जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, एंड देयरफॉर वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, लेकिन इस केस में डिस्टेंस would never be equal to zero, and speed would never be equal to zero. That the distance is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus EA, and speed is the rate of change of distance. The speed could never be equal to speed could never be equal to zero. Speed could never be equal to zero. So the distance could never be equal to zero, and velocity may be equal to zero or greater than zero. So similarly, we have the speed is what? Speed is the distance upon time. The speed is the distance upon time. The speed is the distance up. Speed is represented as symbol s, and it is equal to distance upon time, that is measured in meter per second. Similarly, velocity is the rate of change of displacement. Velocity is the rate of change of displacement, and its unit is also measured in meter per second. That's all. This is the concept of speed and velocity.